Okay. So Gurudev is reading Gita Mahatma. The 18 names of the Bhagavad Gita. Haribo. The Hindi is looking like very poor connection, freezing all the time. Kunjeshwari Didi, Indira Didi. Hindi connection is poor. Haribo. Hindi is very... So the 18 names of the Bhagavad Gita. जो मनस्थिर करके जाने एकाग्र चित्त से So if we concentrate our minds और नित्य ज्ञान सिद्धि प्राप्त लाभ करके you attain knowledge of your transcendental form, and in the end you will also directly attain the service of Krishna. Kunjeshwari Didi, Hindi is not working. भगवान की परम पद प्राप्त करते। Okay, they are changing the hotspot. जा सकते पहले जमदूत आकर के सब चले गए, वापिस हो गए। So the Jamadutas came and they went back. जम महाराज पधारे। And then in the end, Jamaharaj himself came. Jamaharaj said, अपने सतीत्व के द्वारा पतिदेव के प्राण को because of your chastity, you're able to keep the life of your husband. रक्षा की उसी प्रकार गीता पाठ करने So in the same way, if we read the Bhagavad Gita, जीव समस्त प्रकार से पाप the jiva will be free from all the sins और पुनर्जीवन प्राप्त कर सकते हैं। and will attain life again. So we heard also why Sita is also one of the names of Gita. कैसे पवित्र स्त्री थी। Sita was a very pure lady. प्रकार प्रलोभन दे करके Ravana tried so hard to destroy her chastity, but सीता देवी Sita was in Ashoka Batika. दूर रखा। जिसमें मैंने काल कहा था She could ये अशोक वाटिका में सीता रावण इतने काम में उन्मत्त हो गया, सीता देवी के सतीत्व को ध्वंस करने के लिए आया। और उस समय सीता देवी ने किया कि
केवल एक स्त्री के मंत्री पुत्र So Sita Devi, she took one blade of grass and she put in front of her and she said, "Hey Ravan, स्त्री के तुम उल्लंघन करके लांग करके मेरे पास आ जाओ, if you साथ cross this blade of grass and try to touch me or come near me, you'll die." So with a blade of grass, Sita Devi was able to stop Ravan. She could keep Ravan away. So you see the power of her chastity. सत्य की भी वर्णन इसी का है, जहाँ पर सत्ता शब्द के गीता में आत्मा तत्व की कथा So वर्णन हुआ है। one name of the Gita is Pativrata. So Gurudev gave the example of the Pativrata. है। So Satya also गीता means the में highest आत्मा truth तथा is the Bhagavad आत्मा Gita. तत्व जो है आलोचना किया है। मामई वंश जीवो लोके जीवो भूतो Gita will explain also about the soul. नित्य और सनातन है। The Jiva is eternal. गीता में आत्म तत्व के बारे में ही ज्ञान दिया। इस आत्म तत्व के बारे में जो जान लेते हैं उनके पुनर्जन्म नहीं होता है। Those who have knowledge about the soul, they will not take birth again. ऐसे ही लिखा, जद्गत्व तद विज्ञानम भवति, जिसको जान लेने से समस्त प्रकार ज्ञान अपने आप हो जाता है। If you have knowledge about this, then you have knowledge about everything. इस आत्म तत्व और भगवत तत्व गीता की मूल प्रतिपाद्य विषय है। ये आत्मा So this knowledge of the soul is like the main subject of the Bhagavad Gita, the relationship between God and the soul. पतिव्रता, पतिव्रता के बारे में काल भी हम लोग अवलोकन So Pativrata, also yesterday I told you about the meaning of Pativrata. आलोचना किया, जैसे उत्तरी अनुस्वा, The example of Atri and Anusua. कैसे उत्तरी मुनि के साध्वी पत्नी अनुस्वा ब्रह्मा विष्णु शिव के भी अपने छोटे सा पुत्र बना, Because of her विष्णु और शिव devotion to her husband, she could make अनुस्वा chastity. She made Brahma, Shiva and Vishnu परीक्षा लेने के लिए। small like a baby. इस कथा भी बहुत सुंदर है। Brahma, Vishnu, Shiva came to test her chastity. बताते थे। Even Gurudev used to tell this story. एक बार नारद Very ऋषि beautiful. Once Narada Rishi, जाकर के लक्ष्मी के निकट he went to Vaikuntha सतीत्व के and बारे में he told Lakshmi about the chastity of Anusuya. Lakshmi was very jealous, and then she told, अनुस्वा की सतीत्व के नाश करो। go to the earth planet and somehow destroy the chastity of Anusuya. तो स्वयं विष्णु भी ब्रह्मचारी के वेश में In the beginning, Gurudev told the story of the woman who had saved her husband by the power of her chastity. That is the name Savitri. One of the names of Gita is Savitri because of that, Savitri. पार्वती के निकट Okay, so coming back to the story of Anusuya, सतीत्व के बारे में Narada Rishi also came to the wife of Shiva जलन है। and also told her about the glories of शिव जी के बोले the chastity of Anusuya. अनुस्वा की सतीत्व के तुम नाश करो। शिव जी भी ब्रह्मचारी के वेश में And then Parvati said to Shiva, okay, go there and destroy the chastity of Anusuya. ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक And also Narada went to Sataloka. ब्रह्मा जी के पुत्री ब्रह्मानी के निकट भी अनुस्वा के सतीत्व के बारे में बताया। And he told the wife of कहने लगे जाओ Brahma about the chastity of Anusuya. मर्त्य लोक में अनुस्वा के सतीत्व के नाश करो। तो Wife of Brahma told him, oh, go to the earth planet and also destroy the chastity of Anusuya. ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों ब्रह्मचारी के रूप में आ गए, आकर के बोले भिक्षांग देहि है। तो उस समय So Brahma, Shiva and Vishnu, they came asking for donations at the house of Anusuya. But Atri Rishi, that time he was not in the house, he was doing some worship, some oblations. And then Anusuya, she was alone in the house. देखने में बहुत सुंदर है। तो उन्होंने अनुस्वा ने किया कि अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री जो है फल मिष्टान्न आदि जो है ब्रह्मचारी को देने भिक्षा देने लगे। किंतु तीनों ब्रह्मचारी क्या बोले, ऐसे भिक्षा हम नहीं लेते। बोले कैसे भिक्षा लेना, बोले आपके निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा। So Anusuya brought some donations to them. Then they told, oh no, but we don't want donation like this, only if you come naked
And then she was कोई साधारण ब्रह्मचारी stuck नहीं, with surprise. ऐसे शब्द बोलने वाले। Like she was struck with surprise. Oh, how come? पीछे दरवाजे से अनुसुआ अपने पतिदेव के निकट जाकर के सारी बात सुनाया और उस समय उतनी सी समझ ली गई साधारण भी नहीं है। Anusaya told her husband जैसे बोले ऐसे करो। what happened, those brahmacharis, what they were saying, and their husband of Anusaya, Atri Rishi, भिक्षा चाहिए। he saw who they were in the meditation and he said, okay, give to them what they want. कमंडलू से जल पानी ले लिया अनुसुआ ने और So Anusaya came and took some, एक महीने के शिशु जैसे बन जाओ। okay, become, and threw the water on them, become a 1-year-old boy, like 1-year-old baby. एक महीने के जैसे So, no, sorry, not 1-year-old, 1 month old. So, Brahma, Vishnu, and Shiva became very small, just like a newborn. So, by the strength of her chastity, she even made बच्चा बना दिया Brahma, Vishnu, and Shiva babies. और देखा कि अब तीनों तो लौट करके नहीं आए। बोले कहाँ गए? हे नारद ऋषि के बुलाया। नारद ऋषि बोले गए थे जिस काम में वो अपने ही वहीं पर अटक गए। तो सारी वृत्तांत नारद ऋषि भी सुनाए वहीं पर 1 महीने के बालक जैसे उतर के। So the wives of के गोद में Brahma, Shiva, and Vishnu, they came and they पति को कैसे प्राप्ति करे? complained to Narada Rishi, how can we get our husbands back because he's now just like a baby boy, staying with, like a newborn baby, staying with Anusaya. Then Narada Rishi told them, you have to go and come as like brahmacharinis and ask as donation your husband back. लक्ष्मी ये तीनों जो ब्रह्मचारिणी के रूप में आकर के भिक्षा मांगी है। अनुसुआ देवी देखा Anusaya Devi saw that these brahmacharinis were in her house. फल मूल लेकर के बोला हम ये भिक्षा लेना नहीं चाहते। कौन सा भिक्षा? Oh, we don't want to take this donation. What do we want? नन्हे मुन्ने छोटे जो बच्चा जो है। Then the brahmacharinis, they were actually the wife of Brahma, Vishnu, and Shiva. They told to Anusaya, we want as donation, not food or anything, we want our husbands. ये तीनों जो है ब्रह्मचारिणी खड़ी हुई और So, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा है। तो बोले ये है क्या चीज? then Atri Rishi came and saw 3 small young babies and 3 older like brahmacharinis, like adults, women. And then, who are they? सुन करके Oh, these are your sons and these are your daughters-in-law. Then they told everything to Atri Rishi. Atri Rishi was very pleased. फिर दोबारा Then again, Anusaya, मंत्रपुत करके she again put some mantra in the water, and then she threw this on the baby boys, and they manifested in the beautiful form of a brahmachari, Brahma, Vishnu, and Shiva. चले गए। इसके आगे की कथा भी तो है सुंदर। The continuation of the katha is very beautiful. वर दिया है उनके गर्भ से 3 पुत्र की बारे में है। So there was a benediction that Anusaya got about having 3 babies. So, यहाँ पर वर्णन करें गीता Pativrata Katha. पाठ करने से If you read Bhagavad Gita, पतिव्रता के फल all the fruits of being Pativrata, one pointed to your husband, you'll get. हैं? शिव जी के जो है अंश से So from the expansion of Shiva was Durvasa ब्रह्मा जी के बल से ब्रह्मा जी as the son of Anusaya. From Brahma was चंद्रमा और विष्णु Chandrama, Chandra the moon, and दत्तात्रेय प्रकट हुए। from Vishnu expansion Dattatreya appeared in that इसी moment. प्रकार Shastra explains. So इसलिए दुर्वासा भी कम नहीं है। Durvasa is nothing less. He's also one. इसी से प्रकट हुए। He manifested from the Shakti of Shiva. ये समस्त वर्णन है इसमें। मैं तो कई बार चित्रकूट गए ये दुर्वासा ऋषि जब So many times. So I went to Chitrakoot. विदेशी भक्त उसकी अच्छी जो है Some devotees, Western devotees, they were with us and they had a very good camera. चित्र लेकर के आया। They took pictures there in Chitrakoot, very nice pictures. 2 times I went, or they went. गुरुदेव बोले पहली बार जो चित्र ठीक नहीं हुआ Gurudeva said, okay, these pictures are not good. Then he went back again and took more pictures. जो आप जो है वहाँ पर आप जाएंगे चित्रकूट जाएंगे तो आपकी मन जो है बिल्कुल If you go to Chitrakoot, और किसी स्थान में जाने की इच्छा नहीं करती। your mind will be so impressed, and you will not want to leave, to go away from Chitrakoot, संतों को भी because Chitrakoot is such a beautiful and amazing place. लगाए अरे गोविंद कहते हैं ना Like that सुंदर और पवित्र verse of Ramcharitamanas, how Tulsidas applied Chandan in Rama and Lakshman in Chitrakoot. I wanted to go to Chitrakoot,
But now I don't know if they're allowed to go or not. चलेंगे, बास भर के। Let's go everyone to Chitrakoot. Let's go in a bus to वो Chitrakoot. अच्छा रहेगा ना। It will be good वास्तव वो दिव्य स्थान है, because that's a really divine place. ये आपके पूरा पैसा की जो है उसूल हो जाएगा। All your money will be well used if you go there because it's a really beautiful place, Chitrakoot. So nice. हाँ। अभी कहते हैं ब्रह्म बोली ब्रह्म शक्ति के परिचायक है, समस्त शक्ति के उत्स कहा जाता है। So the source of all potency is Bhagavan. स्वयं भगवान In the Gita, Bhagavan के निकट अपने He ऐश्वर्य मूर्ति को दर्शन कराया। showed to Arjun his Aishwarya Murti, universal form. And Krishna said, I am the time. Whatever you see in this world, actually, me, I myself, I am manifesting everything that is in this world. So this is Vishwarupa Darshan, एकादश अध्याय में universal form. In the 11th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna is showing his universal form. शक्ति के उत्सव है ये स्वयं भगवान। इसलिए कहते हैं, फिर कहते हैं ब्रह्म विद्या, गीता के एक नाम किया गया। So one of the names of Gita is also Brahma Vidya. ज्ञान जिसमें दिया गया। Means the Gita has knowledge about Brahma. गीता में All the kinds of knowledge are in the Bhagavad Gita. Actually, if you read nicely the Bhagavad Gita, you no need to read any other Shastra. जो है My Gurudeva, he, जब हमारी हम लोग जब देवानंद गौड़ी मठ में थे, when we were in Devanand Gauriya Mata, बैठ जाते थे। when we used to sit around Gurudeva गीता के in the evening time, एक तत्व के तुम खंडन and like करो। Gurudev said, you उसके द्वारा can destroy all like wrong philosophies just with shlokas of the Bhagavad Gita. Like with some specific shloka of Gita, you can destroy materialism. Another shloka of the Gita, you can destroy Mayavad philosophy. Means actually all the Tata Siddhantas, they are completely described in the Bhagavad Gita. अध्ययन कर लेते हैं। Those who study the Bhagavad Gita, they don't need to study anything else. I think Gurudev said like this, don't need to study anything else. I just completed the phrase, but जरूरत नहीं होता है। yeah, don't need to study anything else. Yes. समस्त वेद के Because सार भी गीता ही है। the Gita is the essence of all the Shastras. समस्त वेद उपनिषद के सार भी गीता ही है। Gita is the essence of all the Shastras. सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में हम देखें, If you see very in a subtle analysis, गीता में नहीं है। there's all kinds of knowledge there present in the Bhagavad समस्त Gita. प्रकार के ज्ञान गीता में है। All kinds of knowledge there present in the Bhagavad इसलिए तो हमारे Gita. सारे बलदेव दाभूषण प्रभु So Baladev Vidabhushan Prabhu, Vishwanath Chakravarti Pada also, all our acharyas, गीता के ऊपर क्या नहीं टीका लिखा गया। they have written a commentary on Bhagavad Gita. विचार इसलिए कहा जाता है ये ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म की ज्ञान उसमें वर्णन है। गीता के ना हम जो है कहा जाता है त्रिसंध्या वंदना और तीन कालों की समष्टि कहा जाता है। यह काल परकाल So, भूत भविष्य वर्तमान past, present and future, गीता हमें देते हैं। Gita will give us information about everything. पाठ करने के साथ ही And if you समस्त प्रकार की read the Bhagavad Gita, you will attain all kinds of liberation as well. कितने प्रकार की मुक्ति शास्त्र में वर्णन किया गया है। The Shastra explains about many kinds of mukti, गीता में हो जाता है। and all kinds of mukti, liberation, they are in the Gita. Gita is like a ABCD के प्राथमिक स्कूल के like a गीता है। priceless gem. Normal people think that Gita is only like ABCD, like that's a beginning shastra for the beginners. But if you really गीता के कितने go deep in the Bhagavad Gita, actually you can see that so many deep meanings in the Bhagavad Gita. ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु Like for example, क्या बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती Baladev Vidabhushan Prabhu and Vishwanath Chakravarti Pad, पर कितने सुंदर they have written a beautiful commentary on the Bhagavad Gita with the meaning of the Shastras. गीता प्राथमिक ग्रंथ होने पर So although the Gita is like a book for beginners or for the beginning, actually all the Shastras meanings are there. Those who read the Bhagavad Gita, those who teach the Gita, they know. जहाँ पर गीता समाप्त हुई But also it is said that where the Gita finishes is where the Bhagavatam starts. तथा क्यों गीता में कुरुक्षेत्र की कथा है Because the Gita is like this, कथा बताती जा the part of the Mahabharata. लक्ष्य करके स्वयं भगवान Krishna is telling Arjun, आत्मा actually, but Krishna is telling all the souls about what is soul, what is not the soul. ज्ञान दर्शन कराया So there are 5 knowledges in the Gita.
ये पांचों ज्ञान गीता में जिसको हो जाता है। और So if you have these 5 knowledges of the Gita, you don't need any other knowledge, you don't need. श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन होते हैं? But still, the Bhagavatam explains विशिष्ट दिखा। how can we serve, make us स्वयं भगवान like specially serve Bhagavan. नंद जसोदा के पुत्र होकर के How Bhagavan is the son of Nanda Jashoda and takes birth. सामान्य बालक के भांति How Nanda Jashoda, he's playing just like a boy in the courtyard of the Nanda Jashoda. How he's relishing Sakyaras. और नंद महाराज के द्वारा कैसे प्रतिपालित होते हैं। How Madhya Jashoda and Nanda Baba take care of Krishna in the Vatsalya Bhav. के साथ कैसे रास क्रीड़ा आदि How Krishna is also performing pastimes with the gopis. वर्णन कर दिया। Rasalila, the Bhagavatam tells all किंतु this. सभी मूल उत्सव But the main source of everything is the Gita. गीता में कहा गया है। So चतुर Gita, गीता विचारश्च पठनं तथा मदोते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया सह। this verse explains the Gita श्री Mahatma. राधया सह पुष्टिकरण कर दिया। Very clear. भगवान कहते हैं जहाँ पर Swayam Bhagavan is saying, पाठन होता है। if you read, study the Bhagavad Gita, I will appear in front of you with my dear Srimati Radhika. So that person who studies the Bhagavad गीता Gita, यदि ठीक से पढ़कर if you properly study the Bhagavad Gita, भगवान दर्शन देते हैं। then Bhagavan will give darshan to you. भले ही आपके गीता की श्लोक उच्चारण ठीक से Okay, maybe you're not pronouncing properly the verses of the Bhagavad Gita. You know, just like the story when Mahaprabhu was in गीता पाठ South India, there was a boy reading the Gita उच्चारण ठीक नहीं था। and he was not pronouncing properly the Sanskrit slokas. The Panditas were making fun of him, fun of that boy. गीता पाठ में नहीं कोई नहीं बैठता था। Nobody was sitting in front of him when he was reading the Gita. तो महाप्रभु जब उस मंदिर में But when Mahaprabhu came to that temple, Mahaprabhu he sat in front of that boy. से लेकर के The boy was reading from the since the first chapter until the 18th chapter. महाप्रभु ने उसको भाव को दर्शन किया। Mahaprabhu saw his bhav and Mahaprabhu said, तुम्हारे आंख में क्यों आंसू आ जाते? क्यों "Why are you crying when you study the वो Gita?" बालक ने कहा देखो The boy said, गुरुदेव के कहा गुरुदेव तो मैं मूर्ख हूँ। "Because one day I told Gurudev, I am so foolish, I don't have any shastra again. क्या करूँ? How can I study गुरुदेव ने anything?" कहा तुम एक काम करो। Then Gurudev said, "Do one thing, एक गीता खुद करके ले आओ। buy one Gita in the market, 5 rupees, छोटा गीता खुद करके लाओ। a small Gita. रोज गीता पाठ करो। गुरु आज्ञा मानी गुरुदेव के आदेश। So every day you read the Bhagavad Gita. Get in the order of my Guru. Every day I was reading, studying the Bhagavad Gita. पता नहीं है गीता को कैसे श्लोक I don't know करना है। how to कैसे pronounce the slokas of the Bhagavad Gita. What is the rhythm, metrics of... संस्कृत में है। Because the slokas of the Gita, they are in Sanskrit. संधि का युक्त श्लोक है ना, उसको कैसे पाठ करेगा? है? तो वे पढ़ने लगे, किंतु कहने लगे जब गुरु बात पर विश्वास करके मैं गीता पाठ करता हूँ, बस एक ही चित्रपट मेरा। But because I have so much faith in my Guru, when I was reading the Bhagavad Gita, I only saw one image in my head. अर्जुन के रथ को क्या करे? One thing, that Krishna was taking the chariot of Arjun, है? and Arjun was sitting up and Krishna was sitting down, and मुस्कान करते हुए Bhagavan, he was smiling, देख रहे हैं, looking towards, बस यही हमारे दर्शन होते हैं। Krishna was smiling, looking towards Arjun. पाठ करूँ गीता, जब तक मैं गीता पाठ करते रहूं, पढ़ते रहूं, श्लोक तो पढ़ते रहूं, मेरे शब्दार्थ के ज्ञान नहीं है। किंतु I read the Gita, I don't know करते समय वही बस भगवान the meaning exactly of the Sanskrit, but I just see this beautiful form of Krishna. इससे मेरा हृदय द्रवित हो So जाता है। my heart melts, महाप्रभु ने and that's why I'm crying. Then Mahaprabhu said, पाठ करा actually your reading of the Bhagavad Gita is successful, it's proper. इसलिए ये समस्त दिखा तात्पर्य है गुरु वाक्य पर विश्वास करके शास्त्र अध्ययन करो। So if you have to read the scriptures with faith in your Guru, maybe you're telling properly the slokas or not. विष्णाय नमः और विष्णवे नमः उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। Vishnaya Namaha or Vishnave Namaha, there's no difference. भावग्राही जनार्दनम, भगवान क्या करते थे? Bhagavan is accepting your mood. He accepts your mood, that's it. तो इसी प्रकार की कहते हैं जे गीता पाठ करने से So if you read the Bhagavad Gita, प्रकार जो है all kinds of मुक्ति प्राप्त हो जाती है। liberation मुक्ति के तीन will be प्रकार attained by the jivas. शास्त्र में कहा गया है। Like the Shastra explains 3 kinds of mukti, आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही मुक्ति। 3 meanings of mukti. दुख से निवृत्त हो जाने मुक्ति। To be free from all kinds of sufferings. Atyantaki dukkha nivritti iti mukti. Mukti, liberation, is to be free also from all sufferings, but higher meaning is when you attain the lotus feet of Vishnu, this is mukti. किंतु महाप्रभु ने सर्वश्रेष्ठ But Mahaprabhu gave the highest definition of mukti. मुक्ति जनता रूपम सस्वरूप में व्यवस्थित मुक्ति। He said, समस्त प्रकार के तत्व ज्ञान के छोड़ करके जो अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि करके give up all kinds of knowledge, but you just realize your own, the knowledge of your swarup, your transcendental form. भगवान की जो रसमाधुर जी का सेवा आदि करते हैं Then you serve उसी की Bhagavan. कहा जाता है यथार्थ मुक्ति कहा जाता है। This is the real revelation. You serve Bhagavan in your own swarup.
ऐसे कहा। Definition of mukti. फिर इसलिए कहा था मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा, गीता भगवान के अर्ध स्वरूप कहा जाता है। Gita is like गीता के जो है भगवान के अर्धमात्रा में कहा गया। और चिदानंदा, चित आनंद a part of Bhagavan. And Gita is like also called Chidananda कथा ही वर्णन because the Gita only speaks about spiritual things, Chitananda. जो है कि वो आत्म स्वरूप आत्मा आनंद ही है। क्यों The soul, जीव क्या है? आनंद स्वरूप है। वो आनंद की the Jiva is also a part of this personification of bliss, Ananda Swarup. Just like the fire and the sparkle of the fire. धर्म वो चिंगारी में ही, So the same nature of the fire is also in the spark of the fire. स्पर्श उसमें रहता है। केवल तेजस पदार्थ के संयोग होने पर बृहद अग्नि धारण कर लेते हैं। उसी But if the spark of the fire gets in touch with something inflammable, it will also create a big fire. कृष्ण नित्य दास, So in the same way, सेवा की वृत्ति जीत में है। the Jiva has the tendency to serve Krishna, whether it's in Dasya or Vatsalya or Sakya or Madhurya. We have, the Jiva has the tendency to serve Krishna in a specific way. And by the association of sadhu, this will manifest. जीव अपने स्वरूप ज्ञान को उपलब्धि कर लेते हैं और आनंद प्राप्त कर लेते हैं। और भवग्नि, भव Another name of the Gita is Bhavagni, ताप को जो है ध्वंस करना, means destroyer of all the material sufferings. देना। और What is Bhava? To be born again and again in this world. This is Bhava. ये भव सागर, Like Bhava Sagar, ocean of material existence. Be born again and again, die again and again. अग्नि जिस प्रकार सब कुछ के छाई भस्म करके पवित्र रहा, The fire, he can उसी प्रकार गीता पाठ करने से make everything ashes and continue pure. पाप के, So in the same way, if you read the Bhagavad Gita, और फिर उदाहरण all your sins will be destroyed and you'll be pure. अग्नि के शुद्ध सोने के प्राप्ति करने के लिए, So for example, to get a pure gold, you have to put the gold again and again into the fire, and all the dust or any dirt of the gold will उसी प्रकार disappear if you put the gold in the fire again and again. So in the same way, बाघ के मुख से वो रक्षा हो जाता है, त्रिताप से वो the jivas will be अधिदैविक आदि होती protected from the Adidevik, Adibhotik, Adi Devik, the three kinds of miseries will be destroyed for the jivas. जीव के समस्त प्रकार के भ्रांत की जाए नाश करना। Another Brantanashini, another name of the Gita, destroyer of all the illusions. The highest illusion is what? What is the highest illusion we have? आत्मबुद्धि करना Is to think that the soul is our body, the body is our soul. सबसे बड़ी है। मैं This is ये the शरीर worst हूँ, मैं illusion. आत्मा हूँ। If you think, no, I'm not this body, I'm the soul. जो घर में जो रहता है उसके क्या करता है? I'm not the house, I am the owner of the house. So Griha and Grihi, शरीर जो है मानो गृह like माना जाता है। this, my body is like a house, गृह and the soul which is staying in this body is like the गृह स्वरूप है। और उस गृह में soul. कौन रह रहा है? The soul is staying the किंतु house of this body. मैं के द्वारा मोहित होकर के But the jivas, they are under the illusion of शरीर को क्या Maya. मान रहे हैं? So they are thinking their bodies is their actually self, मान रहे हैं। the soul. शास्त्र में क्या कहता है? आत्मा अजर अमर But Shastra say no, the soul is हर जन्म में हम immortal. को छोड़ देते हैं, Every life we give up our body, छोड़ देते नहीं। मनुष्य इससे पांचभूति से Isn't it? हम छोड़ करके चले जाते हैं, we give up our फिर material दूसरे body. शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे Then we enter another body. Just like if you leave one house and you go to live in another house, ये isn't नया it? मकान बनाया, For example, पुराने घर को हम क्या कर देते हैं? you make a new house, छोड़ देते हैं, then you बेच देते हैं, give up or you sell, or, I mean you just leave your sell, or कुछ भी करो। you know, maybe you give your old house in rent. नया घर में जैसे चले जाते हैं, उसी प्रकार So in the same way, शरीर रूपी गृह व घर को छोड़ करके नया घर में प्रवेश कर जाते हैं। the jiva इस प्रकार leaves this body and goes to another body. So this is an illusion. ये बद्ध जीव में रहता है। The Bada jivas, they have this. दूसरी वस्तु आरोप करना, इसको भ्रांत कहा जाता है। Illusion is to think something else. करने से But if you study the Bhagavad Gita, प्रकार के भ्रांत all kinds of your illusions नष्ट हो जाता will be destroyed, है और शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। and the pure knowledge will come to you. ऋक् साम यजु
वेदों की ज्ञान अपने आप हो जाता है। And the knowledge of the three Vedas फिर हमने also will come to गीता में भी you. कहा गया त्रिविद्या विदज्ञान निश्चित वेदत्रयी जो है इसको भी छोड़ करके क्या वेदों में जो है कहीं कहीं कर्म ज्ञान योग आदि के बारे में बात So the Vedas also speak about karma, jnana, yoga, but you should also give up this. भवार्जुन इसलिए वेदत्रयी वेदों के जो है ये समस्त भी वर्णन किया गया। So in the Vedas this is all described. परामणि श्रेष्ठ So one of the names of Gita is also Vedatrahi and another is Parananda. Because if you read the Bhagavad Gita, you feel the highest bliss in your heart. गीता ज्ञान हो जाने पर And if you have knowledge about the Bhagavad Gita, you will not see the others' faults. You only see other people's qualities. भ्रमर फूलों के Just like आस्वादन करते हैं, शहद आस्वादन करते हैं, मधुमक्खी the bumblebee is relishing मधु ही आस्वादन honey. शहद आस्वादन करते हैं। ठीक उसी प्रकार In the same way, अध्ययन करने पर if you read and study the Bhagavad Gita, you will get the highest bliss. And also you can be able to give bliss to others. क्या कहा गया तत्तार्थ समस्त Another name of the Gita is Tattvartha. तात्पर्य Means all the meanings of the scriptures are in the Gita. यानी तत्तार्थ जो कहा गया। और अंतिम नाम क्या दिया And the last name of the Gita is Jnana Manjari. उत्सव एक गीता ही कहा Gita is the source of all the knowledge. है। गीता में हमें क्या देता है विज्ञान यानी अनुभव करा देते हैं। Gita gives us realization. साथ विज्ञान भी Gyan and Bigyan. देते हैं। Realization also. और गीता की ज्ञान स्वरूप माने मंजरी के भांति जैसे मंजरी अत्यंत कोमल होता है Just like a manjari होता है ठीक is उसी very प्रकार soft. ये The गीता same के way. ज्ञान समूह जो है मंजरियों के भांति है। Gita is like a manjari. ज्ञानों के द्वारा हमारे चित्त को जो है शांत कर देते हैं, स्निग्ध कर देते हैं। With all this knowledge, the Gita can soothe our hearts. So the Shastra explains the 18 names of the Bhagavad Gita. Vanchakalptarubhyascha. वैष्णवे भो नमः। है गीता में हमें क्या